आपको हम जो आप बताने जा रहे हैं इसको हम कहते हैं एटोपी और एलर्जी। ओके सर। ठीक है, ये मतलब क्या है इसको मैं आपको संक्षेप में समझाऊंगा। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे, इसकी इम्पैक्ट नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो बातें हम कर रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। जब तक मैं आपको एजुकेट नहीं करूंगा, आप इस बीमारी से जूझना मुश्किल होगा आपको। एलर्जी क्या है मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, पेशे से चार्टर्ड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उम्र बहुत कम है। देखिए हमारी जो हवा नली है एक ओपन सिस्टम है। नाक से हवा अंदर जाती है, उसके पीछे एयर कैविटीज होती है जिसको हम साइनस कहते हैं। गालों के पीछे 2 होते हैं, कपाल के पीछे, नाक के पीछे 2 होते हैं, और बेस ऑफ द स्कल, इसको हम मैक्सिलरी साइनस, इसको फ्रंटल साइनस, स्पिनॉइडल, इथमॉइडल। बात यह है कि हमारा बहुत चेकबल सिस्टम है। जो भी एयर हमारे पास जाता है, क्यों हम सांस लेते हैं? क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारी चीजें जाती है जिसको हम कहते हैं एरो एलर्जन, उड़ने वाली चीज। डस्ट माइट हो गया, पेट्स के बाल हो सकते हैं, डेंडर हो गया, पोलन्स हो गए, कार्बन का सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हो गया। तो इसको सारे उड़ने वाली चीजें आपके साथ जा सकता है। अब देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारे हवा नली के अंदर कई प्रोटेक्शन है। एक तो मैकेनिकल प्रोटेक्शन, कोई चीज बड़ी चीज आए तो हम उसको छींक के खांस के निकाल देते हैं। अगर मान लीजिए आप ऐसी स्थिति में है जहां चारों तरफ कारपेट हो, मैट्रेस हो, पिलो कवर्स हो, तो छोटी छोटी कीड़े पनपता है, उसको हम कहते हैं माइट। देखिए माइट ऐसा दिखता है, बिल्कुल, ये आंखों से नहीं दिखता। ये सबसे बड़ा दुश्मन है एलर्जी का। माइट हमारे हवा नली में जाके एलर्जी पैदा कर सकता है। एलर्जी का मतलब क्या है कि बार बार कुछ चीजें अगर हमारे शरीर में जाए तो बॉडी उसकी विपरीत चीजें बनाना शुरू कर देता है। दूसरा, अगर मान लीजिए आप डॉग या पेट्स के आसपास हो तो वो हमारे जैसे स्वेट नहीं कर पाते, वो अपने शरीर को चमकाने के लिए या टेम्परेचर मेंटेन के लिए वो चाटते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं लीकिंग। उसके कारण इनके बाल और थूक से छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते, इसको हम कहते हैं डेंडर। ये भी बारीक हवा नली में जाके, तो इसलिए जो पेट्स वगैरह उनसे भी ये हो सकता है। तीसरी बात है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो ऑटम, जो इस तरह की ऋतु में या मार्च की ऋतु में होती है, स्प्रिंग टाइम में छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते हैं फूलों के पराग या रेणु कर लीजिए, वो भी एलर्जी क्रिएट कर सकता है। मोटे तौर पे क्या है कि कोई भी चीज बार बार आपकी अगर हवा नली में जाए, नाक के जरिए, साइनस के जरिए, गले के जरिए हवा नली में जाए, तो बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करने लग जाता है। बट एक चीज याद रखिएगा, एलर्जी उसी को होता है जिसके अंदर एक संवेदनशील हो, जिसके एक जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी हो। 1% जैसे उसको कहते हैं ना, नेचर होना चाहिए उसकी जेनेटिक, नर्चर मतलब वो अगर एक टेंडेंसी जिसको फैमिली में जेनेटिक है, उसको बार बार अगर कुछ चीजों से एक्सपोज हो तो एलर्जी बढ़ सकता है। समझ गए ना? अब देखिए कई प्रकार के सेल्स हमारे शरीर में होते हैं, मास्ट सेल्स, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, डेंड्राइटिक सेल्स, गॉबलेट सेल्स। अभी क्या है इसका मतलब क्या है? ये सारे अलग जो शक्ल सूरत वाले सेल्स है बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कोई चीज बार बार आ रहा है, जैसे मान लीजिए डस्ट माइट, शुरू में इसको होने में सेंसिटाइज हो जाता है आदमी, बार बार आते आदमी कहता नहीं, फिर बॉडी कहता है यार बहुत थक चुका हूं मैं, बार बार वॉर कर करके थक चुका हूं। बॉडी धीरे 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 फिर उसकी विपरीत चीजें बना लेता है। इसका नाम है आईजी। आपकी आईजी कम से कम जो नॉर्मल हमारे शरीर में 150 से नीचे होना चाहिए, तो 700 तक पहुंच चुका है। मतलब ये मतलब 6 गुना पहुंच चुका है आपका। इसके मतलब क्या, बॉडी 6 टाइम्स मोर रिएक्टिव हो चुका है। इसी का मतलब, इसको हम कहते हैं आर्मिंग एंड फायरिंग। तो बॉडी जैसी फायरिंग कर ले जाता है, तब आपस में 2 अपोजिट चीज झगड़ा करेंगे तो उसमें केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है हिस्टामिन। जैसे ही रिलीज होगा तो एक लाली शुरू हो जाती है, उसमें नजला, जुकाम, नाक बंद, इरिटेशन, आंखों में जल, क्योंकि बॉडी फाइट कर रहा है। जब इसको अगर ना रखे, उसमें एक प्रकार के सेल्स माइग्रेट करती है जिसको हम इसिनोफिल कहते हैं। जैसे इसिनोफिल तो एक न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गया, झगड़ा शुरू। इसी झगड़े को अगर हम रोके ना रोके तो ये आगे चल के लंबी प्रॉब्लम हो जाती है, दमा बन सकता है, लंग्स खराब हो सकता है, साइनस। तो ये देखिए, ये है नजला, ये नजला गिरना है, इससे दमा। तो अब ये तो मैंने आपको आज तक किसी ने एजुकेट किया इस चीज से? नहीं किया, पहली बार कर रहे हैं। आप एक पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दवाई लिखने से एलर्जी की जितनी दवाई आप खा रहे थे वो रिलीवर है। जैसे मान लीजिए टेम्पररी, आप मान लीजिए एक डॉक्टर अगर आपको टेम्पररी रिलीफ का दवाई दे रहा है, इसके बाद जड़ तक आप ठीक नहीं हो रहा, तो आपके शरीर में जो ऑपोजिट चीजों की जो लड़ाई चल रही है, एंटीबॉडी वर्सेस एंटीजन, उसकी रूट कॉज में जाना पड़ेगा। तो हमें खोजना पड़ेगा कौन कौन सी चीज आपको परेशान कर रहा है। मैं मानता हूं आपकी हड्डी की रिफ्लेक्टेड सर्जरी हो गई है, बार बार परेशान है, बट अगर जिस चीज से आपकी एलर्जी हो रहा है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमें कोई टेस्ट करना बहुत जरूरी पड़ेगा। एलर्जी लेवल पता हो गया। अब किससे एलर्जी है? 90% जो एलर्जी होता है वो एरो एलर्जन, उड़ने वाले एलर्जन से होता है।
अब देखिए हमारे देश में पहले क्या होता था, ये उड़ने वाले एलर्जी के टेस्ट मुश्किल होते थे क्योंकि रिएक्शन होने के, तो ये प्यूरिफाइड तरीके से एलर्जेंस बन के इस देश पे आता है, जो अगर हमारे शरीर में डाले, बहुत टेक्निक उतनी इंप्रूव कर गया, तो हम इससे खोज सकते हैं किस किस चीज से बॉडी सेंसिटिव है। अब ये वीडियो को देखिए आप। Skin prick test is a part of the evaluation for determining treatment for type 1 allergies. A skin prick testing is quick and convenient in vivo diagnostic technique that helps correlate clinical manifestation of allergen sensitivity to the case history, helping you clearly identify the underlying reason for type 1 allergies and decide the best line of treatment. Prior to skin prick testing, a detailed history taking is essential to decide which set of allergens can be used for testing. How to do a skin prick test? Standardized allergen extracts provide high sensitivity, therefore high accuracy of test results. Use of standardized products for major allergen groups, that is mites or pollen, is recommended for doing a SPT. Select the test site on the volar surface of each forearm. Be careful to choose a site that offers sufficient surface area to ensure uniform application of the test solution. SPT can also be performed on the back if the surface area is not sufficient on the arms. There are two techniques by which the allergen test can be done. 1. Using the multi-prick applicator. Step 1. Loading the allergens. Multi-prick applicator systems are provided with allergen loading trays. Trays are designated as A, B, C, and so on based on the number of allergens used. Each tray has 8 wells, numbered from 1 to 8, for loading the allergens. Prior to conducting the test, standardized allergen extracts need to be loaded in the wells of each tray, based on the labeling. The glass pipette provided with each vial of allergen solutions load 0.5 milliliters of the solution in the well. Avoid the dropper from dripping on the tray surface. Each well should contain at least 7 to 8 drops to allow sufficient submersion of the multi-prick applicator. Each 1 milliliter of allergen extract lasts for more than 100 tests, so ensure the wells are not overloaded to avoid wastage. Also, make sure the tray lids are closed and stored at 2 to 8 degrees centigrade when the kit is not in use. Step 2. Testing using the multi-prick applicator. After loading the wells, you are ready to begin testing. Remove the disposable multi-prick applicator from the sterile container. Place the applicator in the loading tray by inserting the pricking heads into the wells. Test site should not be disinfected before testing. However, skin care products should be wiped off from the test site. Number the test site based on the number of allergens to be tested, using a marker to aid reading of test results. To apply the allergens, remove the multi-prick applicator from the tray, making sure the pricking heads do not touch any other part of the tray while removing it. Place the applicator with heads numbered 1 and 8 on the proximal end of the test site. Press the loaded applicator on the forearm with sufficient and even pressure to allow adequate delivery of the allergen solution. With proper pressure, a distinct application pattern will be seen on the test site. Discard the applicator after use. You can repeat the same procedure for the allergens in the other trays. This technique is non-invasive and bloodless, aimed to maximize patient comfort. Method 2. Using the allergy prick lancet. A specially designed allergy prick lancet can be used to apply allergens one by one at the test site. Test site should not be disinfected before testing. However, skin care products should be wiped off from the test site. Markings are made using a biro indicating the sites for application of allergen solutions. Drops of test solutions are placed on the patient's forearm at the marked sites using the dropper provided with each vial of allergen solutions. Test sites
should be at least 2 to 3 centimeters apart. Positive and negative controls are placed first, following which allergen solutions of dust mites, pollens, etc. are placed one by one. Using the lancet, a prick is made through the test solution drop by positioning the lancet at 45 degrees and slightly lifting the skin so as to allow the allergen solution to enter the epidermis. An allergy lancet has a calibrated tip measuring 1 millimeters and is therefore minimally invasive and bloodless, aimed to maximize patient comfort. A blood lancet is not recommended for skin prick testing. A prick lancet should be used only for applying one allergen solution and then disposed of. Each prick requires a fresh lancet to avoid carryover of allergens or false positives. Reading and interpreting results. After application of the allergen solutions, wait for 15 to 20 minutes to observe the test results. During this time, the test site should not be disturbed by scratching, touching, or other contacts. A positive reaction to any test allergen is presented at the site of the application in the form of a localized reaction referred to as a wheel and flare reaction, which is characterized by formation of pseudopodia, which is known as wheel and flare. The wheel can be marked with a biro, and the diameter can be accurately measured using the wheel meter. The diameter of the wheel is the yardstick to diagnose sensitization to a particular allergen. A wheel of more than or equal to 3 millimeters is considered a positive reaction for that particular allergen. Gradation of the sensitivity for an allergen is based on the size of the wheel diameter. A positive skin test reaction must be interpreted in the light of the patient's history and physical examination. The results of the test can be recorded on the reporting form provided by your kit manufacturer. Post-test counseling must be provided based on the results. Patients with a history of asthma who have positive skin prick test results should be observed for at least 20 minutes after completion of the test. This holding time is also applied in patients with past history of anaphylaxis. Before conducting the test, patients must be screened for suitability for skin prick testing by a medical practitioner, taking into account indications and contraindications. Allergens to be tested or panels of allergens must be ordered individually based on patient history and exposure. Patients should not be tested if they have recently taken antihistamines, that is, within 1 week before the test, or other medications which interfere with the test response, or on skin with active dermatitis or open lesions. Appropriate medications and equipment to treat anaphylaxis must be readily available. Asthma, pregnancy, beta blocker and ACE inhibitor use are relative contraindications to skin prick testing. आपको ये जो चीज बता रहे कि ये जो आपने वीडियो देखा, ये जो मैंने आपको एलर्जी कैसे होता है एजुकेट किया, so I've educated you, I've explained you this video. Now you know, now your mindset is ready. The body is overreacting to certain things. So allergy is not infection. Allergy is body's overreactive behavior, is a hypersensitivity behavior. तो इस बिहेवियर को जानने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी चीज आपको ट्रिगर कर रहा है. ये खाने पीने से नहीं है, बिकॉज जो मैंने हिस्ट्री आपकी डिटेल ली है वो फूड एलर्जी नहीं है प्रॉब्लम. सो एरो एलर्जी टेस्ट करने के लिए मुझे एसपीटी करना पड़ेगा, सिंगल प्रिज एलर्जी टेस्ट करना पड़ेगा, और ये बहुत सेफ और इफेक्टिव. हमने इतने सारे एसपीटीज किए, आज तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ इस पे. इससे क्या होगा, जिस चीज से हमें अगर आइडेंटिफिकेशन मिलेगा पैरामीटर्स, उसको अगर अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करेंगे, अगर नहीं अवॉइड कर सकते, अगर डस्ट माइट है कैसे अवॉइड करेंगे आप, मिनिमाइज कर सकते हैं डस्ट, तो उसकी हम वैक्सीन बना सकते हैं और आपके शरीर में डाल सकते हैं. इसी को इम्यूनोथेरेपी कहा जाता है, और इतना बेहतरीन रिजल्ट है हमारे इसके ऊपर. तो आप जो आपने ये एजुकेटिंग वीडियो देखा है, इसको अवेल कीजिए. हमारी इस फाउंडेशन में, सांस फाउंडेशन में अलग अलग हमारे एलर्जी टेक्नीशियंस इसके ऊपर काम कर रहे हैं, एजुकेटर्स काम कर रहे हैं. आपको एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम दिया जाएगा, ठीक है. तो आप इसमें इतने सारे एलर्जेंट्स होते हैं पॉसिबल है, तो आप
को हिट एंड ट्रायल वो कैसे देखिए, कितना आपने देखा मैंने क्या बोला कि हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपकी डिटेल हिस्ट्री ली, जो आपकी लाइफस्टाइल है, जैसे आप चार्टेड अकाउंटेंट फाइल के साथ होते हैं, डस्ट के साथ होते हैं, ऑफिस पे होते हैं। अगर आप मान लीजिए एग्रोबेस्ट पे होते तो एग्रोबेस्ट वाला चीजें देखना पड़ता था। अगर मान लीजिए कोई हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर का देखना पड़ता है। अगर डॉक्टर्स है उसके, तो आपका पेशा, प्रोफेशन, एनवायरमेंट सारे इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो पता नहीं चलेगा कौन कौन सी चीज से आप करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक वीडियो के फॉर्म में बनाया। हर पेशेंट को एजुकेट किया जाता है यहाँ, हर एक को वीडियो ट्रांसफर कर दिया जाता है। हमारे साइट्स पे देख सकते हैं, सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। जब तक मैं आपको एजुकेट नहीं करूंगा आगे हम तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एलर्जी। उससे क्या होता है कि आप समझेंगे, कुछ चीजें अवॉइड भी करना शुरू कर देंगे कि हाँ ये तो हो सकता है, और आप दिमाग में चलने भी लग जाएंगे ये